expecting? What are you looking forward to from the Marvel film? Some very interesting cinema, and of course cinema from the city where Indian cinema takes birth in, so that's Mumbai. And yeah, celebrating great artists and all kinds of craft, and we've been here every year, and it's an honor to be in a venue like the Liberty Cinema, which is like almost, I would say, a landmark in the cinemascape of India, not only Mumbai. And I have had the honor of performing in this venue for the Kashish Film Festival. To be at the Mami as the audience gives me immense pride. Yeah. You are a woman with a golden voice. Can we hear something, some special number for? What would be appropriate? I wouldn't know. Ambar Saria. Ambar Saria. Why not? That's your favorite. Any other farmaishes, tell me. मुझे क्या बेचेगा रुपया? मैम एक छोटा सा गुनगुना दीजिए ना। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे है पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर अंबर सरिया, मुंडिया वे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। मैडम एक दिवाली विश भी दे दीजिए। दिवाली की शुभकामनाएं। नो बेटर वे टू सेलिब्रेट देन विद म्यूजिक, फैमिली, स्वीट्स एंड ग्रेट फूड। पटाखे ना जलाएं तो बेटर हो, या एक दो शुभ के लिए जला दें, दिया जलाएं तो बेटर हो। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ब्यूटिफुल अर्थ दैट हैज़ बीन गिवन टू अस एज अ गिफ्ट. So that's my wishes for Diwali. Thank you. Yeah. हाँ जी बोलिए बोलिए जी। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मामी फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर अलीगढ़ थी, इस साल मेरी फिल्म इन द शैडोज़ है, और सामने वाले हमारे पत्रकार महोदय को बड़ा मज़ा आ रहा है, हंसी आ रही है मुझे देख करके, और बहुत अच्छी बात है कि मुझे देख करके कुछ लोगों को हंसी भी आती है। हाँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्क्रीनिंग ऑफ माई ओन फिल्म इन द शैडोज़ गली गुलियाँ, which will be happening on the 14th, 16th. There are 4 screenings, and 16th is the screening which will be happening at PVR Andheri, where we'll be there for the question and answer. Sir, anything more about the film? What kind of a character will we get to see you play in it? And more we'll talk about it when we meet all of you at PVR on the 16th, okay, in the Shadows, which is an international film, and it is in Busan this year, Chicago. There are many other places it is going to be shown. Sir, Aligarh was such a critically acclaimed movie. Regret missing the race for the Oscars. Probably it should have been India's opportunity. Or how do you look at it? It was last year. So Aligarh was last year. So you just missed the point. रुख को हमने डिसाइड किया था कि हम सीधा बिना फेस्टिवल भेजे हुए उसको सीधा रिलीज़ करेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द ट्रेलर इज़ डूइंग creating quite a buzz. The songs are doing very well. I just hope that everybody goes in the theatre and watch the film. बहुत सारी शुभकामनाएं सब लोगों को दिवाली की। खुश रहिए। हाय यस मैं मनोज सर को बुलाने जा रहा था शादी के लिए, उनको भूल नहीं पाया था। यस क्या चल रही शादी की तैयारियाँ? चल रही है, तैयारियाँ अच्छी चल रही हैं यार, बहुत ही मतलब शादी इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो बस शुरुआत हो गई है। बारातियों को तो हमने निमंत्रण दे दिया है, भेज दिया है, बस अब ये बाकी तैयारियाँ चल रही हैं। मामी से तो मेरा बहुत ही पुराना एसोसिएशन है। शाहिद हमने यहाँ शाहिद दिखाई थी सबसे पहले, फिर अलीगढ़ दिखाई, तो मामी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ फेस्टिवल लाइक मामी इन आवर कंट्री एंड दैट टू इन आवर होम टाउन इन मुंबई। No, yeah, it's basically I've cut my hair for bows. I shaved it half,
So till the time it grows back, I can't really, I have to use that gas. That's the only thing. And how much do you enjoy promotions or making films? What do you enjoy? I love making films. I think that's the best thing I love about filmmaking, about being on set, being in front of the camera. Promotions are part of the job. I'm not a big fan of promotions, but I know it's a part of the job, so I try and enjoy them. Hi guys, I'm Rajkumar Rao and wish you all a very happy Diwali. Thank you. I mean, the first thing I'm looking forward to is seeing the screening of Mukkebaz, Anurag's film. I haven't seen it. I'm really excited to watch that. Any sections that you're looking forward to, specifically Indian, international? No, international mainly, and the regional section in Indian films, because I don't get to see that often. So that is something I'm looking forward to most. On Diwali wish, man. Oh yeah, happy Diwali and a prosperous New Year. Thank you. My movie, one point agenda, one stop shop. So we start filming in February. This is far away. It's a long big project. Durga Puja thing, it's a very old film. Come on, call me. Escaping. Hello? हेलो आज सबसे पहला सवाल, हाय ये ब्रह्मास्त्र कितना धूम मचाएगा? ओह शिट हम लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं आज नहीं, हम बहुत सारे बातें करेंगे, सोचा है। यार मैं क्या बोलूँ इट इज़ मेरी लाइफ में ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सो मेरी बहुत ख्वाहिश है ऑल माई होप्स आर ऑन दिस फिल्म आई होप कि सबसे बड़ा धूम मचाए ये फिल्म अमिताभ, रणबीर, आलिया, You feel so? I do think so as well. I'm very excited about the cast, but I hope that the film is even bigger than the cast. And I hope that they've all come together because of the story of the film and the theme of the film. It's somewhere down the line a superhero film, right? So do we get to see some special costumes, the actors are donning them on? How is it going to be like? Very quickly, I may not be able to give you this information properly right now. The film is a modern day film. It's set in India as it exists today. But the reason the film is called Brahmastra is because the energies, the wisdom, the powers in the film come from ancient India. That's all I'll say right now. There are some costumes, maybe not the way that you would expect them to be. Mami kitna special रहेगा इस साल आपके लिए? What are you looking forward to? Mami is very special for me. Before anybody knew me in films, I used to come and watch films at Mami. So I'm very excited about the festival, and ever since Kiran and Anu have taken over the festival, the curation has become really good. So I hope that I can take time off from work to watch lots of films. मेरे list पे बहुत ही ज़्यादा films हैं. A word on Amitabh Bachchan, how is his character going to be in Brahmastra? कैमरा में ये सवाल मैं यहाँ पे देख के लूँ. Listen, what do I say about Amit ji? It is a great honor for me, as it would be for any filmmaker, to be working with him in his 75th year especially. That's all I'm going to say right now. Rest, there's a lot of time to talk about his role in the film. Ever since the film was conceptualized, I wanted to approach him for the film and make the film with him. So I'm very happy that he's a part of Team Brahmastra. Done? Diwali wish? क्या किसको बोलूँ आप सबको हैप्पी दिवाली हैव अ ग्रेट दिवाली आई एम श्योर वापस मिलेंगे दिवाली के टाइम पे कहीं ना कहीं भागू Hi, what are you looking forward to at Mami this time around? Well, all the films, I have my film showing as well, In the Shadows, which is showing on the 14th. But as of now, I'm looking forward to Anurag's film. Tell us more about your film. How was it working with Manoj? Yeah, it was amazing. I didn't have any screen time with Manoj Bajpayee this time, unfortunately. But it was great to work with Neeraj Kabi and this young actor that we worked with. He's a first-time actor called Om. So it's been really wonderful, and we're very excited to be showing it here. In fact, yeah, we'll have the India premiere here and the world premiere in Busan on the same day. So we're very excited. Diwali wish. सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली और प्लीज़ पटाखे मत फोड़िए आप दिए जलाइए एंड सेलिब्रेट थैंक यू जी मुस्तफा जी मामी में क्या आप लोग
जी मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और स्पेशली अनुराग कश्यप जी की जो फिल्म मैं अभी देखने वाला हूँ, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट। जी सर, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। आने वाले प्रोजेक्ट्स अगले साल आएगा, शुरू होगा, तो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, बहुत जल्द होने वाला है। जी बिल्कुल, रोमांस एक्शन दोनों है, तो अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, तो अगले साल जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तब पता चल जाएगा। जी 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 नर्वसनेस नहीं रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है, लेकिन प्रेशर काफ़ी रहता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है, एंड आई एम हैप्पी टू डू दैट एक्चुअली। सारे व्यूअर्स को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड अ वेरी सेफ दिवाली। थैंक यू। Karan, come. Come here. Is anybody taking Arun? Hello, Tanya.